we cannot generate enough force to counter the gravitational pull because of my body weight towards earth. बॉडी वेट है मेरा, वो तो कहीं नहीं जाने वाला, वो तो रहना ही रहना है। वो चाहे स्पाइडर हो, चाहे कोई बर्ड हो, डॉग हो, कैट हो, ह्यूमन बीइंग हो, बॉडी वेट तो है ही है। एंड बॉडी वेट इज ऑलवेज, इफ यू आर ऑन अर्थ, इट इज mg, में g इज स्मॉल g इज अर्थ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ अर्थ, तो वो तो रहेगा ही रहेगा अनलेस यू काउंटर दैट बाय सम मीन्स। तो जैसे मैंने तुमको कहा कि अगर आपको करना भी होगा तो यू हैव टू टाई योरसेल्फ विथ अ स्टील विंच और रोप। तो स्टील रोप क्या कर रहा है, ऊपर में कहीं पे वो फिक्स किया हुआ है जो आपके बॉडी वेट को काउंटर कर रहा है या उससे ज्यादा वेट लगा रहा है। जब वो ज्यादा वेट लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, जब कम फोर्स लगाएगा तो नीचे की तरफ आएगा। एंड दैट वी हैव बीन सीइंग इन मेनी ऑफ दीज डांस sequences on the stage. So to walk on the wall, to crawl on the wall, you require some adhesive force, जो अदिति ने कहा adhesion, वो word अदिति ने यूज किया। So that adhesion you have to create, which should be more than or at least equal to, but certainly not less than. अब वो एडेशन क्रिएट करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत वेगली यूज किया कि वैक्यूम क्रिएट होता है या कुछ और तरीके का फोर्स हो सकता है। इट इज नॉट ऑलवेज फोर्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वैक्यूम। बहुत सारे टॉय देखते होगे जो बच्चों के लिए बनते हैं प्लास्टिक के और रादर सिलिकॉन मटेरियल के, रबर मटेरियल के, जिसको आप फोर्स लगा के फेंको दीवार की तरफ तो वो चिपक जाएगा दीवार। तो वो कैसे हो रहा है, बिकॉज दैट फोर्स एक्चुअली वहां पे वो जो कैप है बना हुआ उस टॉय में, वो कैप जब दीवार में लगता है, बिकॉज ऑफ योर फोर्स दैट कैप फ्लैटन्स, so the air inside that encapsulated area comes out, since it creates a temporary vacuum within that. Therefore, because of atmospheric pressure, which is experienced from external to that toy, that atmospheric pressure puts that ball on sticking on the wall itself. तो वैक्यूम क्रिएशन की वजह से वो स्टिकिंग होती है, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट this force is always necessary. There could be other type of force. There could be other type of force. जैसे हम लोग जो पेंटिंग्स अपने वॉल पे हैंग करते हैं, या आजकल हम लोग टीवी भी वॉल पे ही लगाते हैं, वो सब किसी और रीजन से है। दैट इज नॉट सक्शन और वैक्यूम कॉन्टैक्ट, राइट? So this is another scene from the same movie in which Spider-Man is shown crawling on the wall. And Peter Parker was the person who was in that role. Now, let us spend some time to understand if we can become a Spider-Man. तो एक टिपिकल स्पाइडर कुछ इस तरीके का होता है। दो अलग अलग, देयर कुड बी वेराइटीज ऑफ स्पाइडर्स इन all over world, varieties of spiders. We are not going to learn about spiders. The only thing that we are going to take from here is, or only 2 or 3 things that we are going to take from it is, क्या लेजर पॉइंटर लेते हैं। So are these
these hairy structures coming out or protruding from the surface of the spider. And these hairy structures are all over its body, on its leg. Look, दिख रहा है ना? For this spider also, there are hairy structures protruding, coming out of these legs. And the second point that we are going to take is that there are 8 legs. स्पाइडर, ये 2 पॉइंट लेके हम लोग चलेंगे. The problem statement is whether a human being can become a spider and therefore a Spider-Man. Right? And the property of that spider that we are trying to imbibe or copy is to be able to hang from the ceiling or to be able to crawl on the wall, walk on the wall. Right? So, when we see those legs, क्योंकि जब वो क्रॉल कर रहा है तो अपने वो 8 legs the spider is using. So let us focus on the property of those legs. So when you see these legs using an optical microscope and later using a electron microscope, तो optical microscope का resolution ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन 1000x से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है. सो 1 माइक्रोन की चीज को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप 1 mm के साइज में दिखा सकता है. तो 1 माइक्रोन वी कैनॉट सी बाय आवर नेकेड आई, बट 1 mm वी कैन सी. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू 1 माइक्रोन थिकनेस की चीज को मैं देख सकता हूं बड़े आराम से. राइट. तो बट अगर मुझको 1000x से भी ज्यादा मैग्नीफाई करके देखना है तो 1 नैनोमीटर की चीज मुझको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप अगर लगाऊंगा तो 1 माइक्रोन वो बनाएगा, बट 1 माइक्रोन वी कैन नॉट सी. तो for looking at 1 nanometer or 10 nanometer object, optical microscopes fail, cannot be used. So we need to have a different microscopy for that. That different microscopy is usually electron microscope. Electron microscope का magnification कुछ भी हो सकता है depending upon the wavelength of electron beam. Okay. So when you see these legs using an electron microscope, so those two views are given on top right and bottom left image. So this one and this one. So you will find that at the end of each leg, so at this point here, there are so many bushes like structures coming out of the tip of the leg. And that is not all. Actually, each of these threads coming out of legs have those bushes on their tip also. इसको भी अगर मैग्नीफाई में करूंगा तो I can see this type of structures coming out. So basically, if you draw a schematic of the spider leg, which is this one, then you can see that there are 3 tiers in that spider leg. One is the main leg, another is hair coming out of that leg, so this one, and third one is that these bushy structures appearing on each hair's end.
So the main structure is called scopula. The next hairy structures are called setae, and these bushy structures, bush type, this one, are called setiules. So you can see that for each leg, there could be thousands and thousands of setae, and for each of those thousands and thousands of setae, there are millions of setiules. Right? So keep this in mind. Keep this in mind. Now, here is the calculation. Here is the calculation of the force exerted by each leg or 8 legs put in together on the wall of on the surface of the wall. Now you come to the atomic structure. So on the surface of the wall, there are atoms. Since there are atoms, so there are electrons. Electrons circulating the nucleus of each of those atoms. Right? Electrons are negatively charged. So those are electrical particles. On each of the setiule, जो bushy structure are coming out of setae, वहां भी atoms हैं, वहां भी similarly there are atoms and electrons and whatnot. Right? Because of their interaction, there is a special force that is created, and that is van der Waals force. Van der Waals was a Dutch scientist, physicist. Dutch का मतलब हुआ नीदरलैंड. Right. Van der Waals got a Nobel Prize in 1910 on his work. He did many extraordinary, he contributed extraordinarily in many fields, particularly in thermodynamics. But on his name, this force is credited, and the force name is van der Waals force. This force is an attractive force. जब आप एटमिक लेवल पे जाके फोर्स स्टडी करते हैं, देन यू विल फाइंड दैट द नेचर ऑफ फोर्स changes from attractive to repulsive force. So till the time the separation between two atoms is above the threshold, तो वो attractive रहता है, उसके बाद वो repulsive force होता है. Okay. So ये जो attractive force है, van der Waals force, which is exerted by one setiule. One setiule. Setiule का मतलब one of these है bush. One of this is one setiule. Okay. So the thing that is given is that the van der Waals force attractive exerted by one setiule on the wall is 41 nanonewton. Newton we all know. Newton is a standard unit of force in our macroscopic world. We all know. 1 nanonewton. Nanonewton means 10 to the power minus 9 of 1 Newton. So as far as it is single setiule, this force of attraction is too small. But one scopula. Scopula is one of the legs, this one, this superstructure, this single leg of spider. Area of one scopula is 37,000 micron square or 0.037 mm square. Okay? Because 1 mm is 1000 micron.
So 1 micron square, 1 mm square is 1000 into 10 power 6 micron square. Therefore, these three zeros are gone, and for the remaining 10 to power 3, these two with 1 0. So 0.037 mm square is the area of one leg of a spider. It is calculated using electron microscopy, there are 78,000 setioles in one leg or foot of a spider. Each of them is 200 nanometer wide. Nanometer is 10 to the power minus 9 meter. Therefore, surface area of each setiole, इसको लेते हो surface area pi r square 0.17 micron square. Therefore, total surface area available of all 8 feet, ये 1 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 78,000 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 0.17 माइक्रोन स्क्वायर, that will give you 0.1 into 10 power minus 6 meter square. One setiole exerts 41 nanonewton force on the wall. Therefore, total van der Waals force exerted by 8 into 78,000 setiole is 24 into 10 power minus 3 10 power minus 3 Newton. So now nano has gone, and we have come on Newton force. Newton is a huge attractive force. So one spider creates, because of its footprint, it creates or exerts 24 into 10 power minus 3 Newton force on the wall, which is attractive force. Now this has to be counterbalanced by its body weight. Body weight of one standard spider is 15 mg milligram, which is 15 into 10 minus 6 kg. न्यूटन में वो आप मान लो 10 से 9.8 के बदले 10 हम मानते हैं सपोज, तो इट इज 0.15 into 10 power minus 3 Newton force that is pulling its body downward, gravitational force. So this force is pulling it downward, and this force which is sticking it, attractive force which is sticking it to the wall. Certainly, this force is much higher than the downward force. And so, the spider sticks to the wall and it can crawl or walk on the wall. Not only single spider, you can see the difference between this force. The difference is around 150, 160. So even if there are 10 or 20 or 100 spiders jumped on a single spider's back, the spider do not fall. The single spider's attractive force, van der Waals force exerted on the wall, can pick 100 or 150 spiders, and still it can crawl or climb on the wall, or it can hang from the ceiling. So this is the simple mathematical calculation that establishes how or why a spider can walk on the wall or hang from the ceiling. Now, coming to the same question, इस स्लाइड पे आता हूं बाद 1 मिनट के बाद. Coming to the same question, that can a human being, taking lead from what we just now discussed, can a human being also become like a spider? So the situation I am giving you, वो मूवी तुम लोगों ने देखी है, 3 Idiots? Yes, sir. तो Yes, उसमें जो वो था, क्या नाम उसका इन लोगों ने रखा था, चतुर,
एनीवे, सो कंसीडर दैट सिचुएशन जिसमें वो जब वो ड्रोन फ्लाई करके वो देख रहा है आमिर खान, तो ऑल ऑफ देम वेर ऑन द ग्राउंड फ्लोर. द ड्रोन along with drone has one camera on it, और ड्रोन फ्लाई करके वो थर्ड फ्लोर में जो जो उसका नाम क्यों बोल रहा है, वो जो यार उसका टॉपर नहीं, जो सेकंड करता था, तो एक लड़का बहुत स्टूडियस लड़का था. साइलेंट सर. हाँ वो चतुर ही था सर. चतुर था ना. हाँ, तो चतुर के कमरे में वो लोग वो ड्रोन उड़ाते हुए जाते हैं और वहाँ कैमरा से देख रहे हैं कि वो चतुर was standing in his undergarment and studying or whatever, reading a book, right? Similar situation you imagine. तुम लोग तो पता नहीं हॉस्टल में रहे नहीं, तुम नहीं, तुम लोग तो हॉस्टल में रहे नहीं हो अभी तक DICT में. So similar situation you imagine if somebody is in second floor of the hostel और ग्राउंड फ्लोर से किसी को मूड हुआ कि चलो चल के देखते हैं कि वो क्या कर रहा है. एंड देयर आर CCTV कैमरास इन ऑल गैलरीज एंड कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस, और आप लोगों को उसमें रात में उसमें मूव करना मना है. So the only possibility is that you come out of your window and crawl through the wall and go to the second floor and peep into the room of that friend of yours or whosoever, जहाँ भी आप कुछ मजे मारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. Can you do that? Or do you think that there is a possibility that in coming decade or 5 years from now, it is a possibility that I can walk on the wall? बताओ, एकदम स्पाइडर का एग्जाम्पल लेते हुए, उससे रिलेट करते हुए, टेल मी द आंसर. पॉसिबल है नहीं है? द थंब रूल इज दैट यू हैव टू काउंटर योर बॉडी वेट. बॉडी वेट ऑफ अ नॉर्मल ग्रोन अप पर्सन लाइक you can take as 60 kg, 50 kg, depending upon how thin or fat you are. But on an average, you can take as, let us say 55 kg तुम्हारे एज के लिए, और 60 kg ले लो. तो 60 kg का न्यूटन, तो 600 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स हुआ. 600 न्यूटन फोर्स को तुमको काउंटर करना है. तो यू हैव टू एक्सर्ट at least 700 Newton force on the wall so that you could be able to crawl. सर, अगर ये पॉसिबल हो गया तो इवन रॉक क्लाइंबिंग, जो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट आजकल माना जाता है, इट कैन चेंज द कंप्लीट फेस ऑफ रॉक क्लाइंबिंग. अभी रॉक क्लाइंबिंग के लिए देखो कितने अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, देन ओनली यू कैन क्लाइंब. वो जो मूवी थी लक्ष्य, तो ऋतिक रोशन वाली, उसमें दिखाया गया है कि बिना किसी सपोर्ट के वो लोग कंप्लीट एक वर्टिकल फेस ऑफ माउंटेन क्लाइंब करके गए एंड देन दे विन ओवर दैट पोस्ट. So all such examples are there of situations where a human being is required to climb a vertical plane. हाँ, कोई आंसर दे रहा था, बताओ. सॉरी. यस सर. नहीं, यस Hello. सर क्या? आगे बढ़. मतलब मैं बोल रहा था, या इट इज पॉसिबल एक्चुअली, नॉट by the way the spider does, but Stanford University students have made something gloves like that, which grabs the wall and helps you to move, not the way spider does, but using some other techniques. Yes, sir. Yeah, what the is that other Stanford technique? University's research has done that. Yes. What is They that? are using some adhesives and vacuum, a combination of both. नहीं नहीं नहीं. No, no, I think it was something called like pads or something like this adhesive pads that they were using, and by that they've done that. सपोज मैं अनाउंस करता हूँ कि आपको मैं 1 करोड़ रुपया स्टार्टअप के लिए देना चाह रहा हूँ,
just to design that technique. Are you ready to take up that investment? And Yes, what is that technique? yes, sir. We can, because sir, there has been such products that have made this adhesive pads and all these things. Because research have been done, so it would be easy to make one. अरे एडहेसिव, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ वो एडहेसिव किस तरीके का हो. Yes, sir. Then I have फेविकॉल to. फेविकॉल It's लगाओगे. actually not adhesive in nature. It is a material called nanosuction that has millions of small suction pads that are placed above the material. In fact, many of the tapes are of nanosuction type and many gloves are of nanosuction type. तो आंसर इज क्या बनाओगे क्या. So, तो लुक, मैंने तुमको बहुत विजुअल एक डिस्क्रिप्शन दिया कि आप ग्राउंड फ्लोर में आपका रूम है, आपको थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर के रूम में वॉल किसी पाइप के थ्रू या किसी रोप के थ्रू नहीं, वॉल पे चढ़ते हुए आपको सेकंड फ्लोर जाना है. तो व्हाट डू यू रिक्वायर? At least that would require clothing like nanosuction that is made up of that material. that Yes, should sir. be- It's different technology. So my answer would have been, or what I was expecting from you is following. कि साहब मैं अपने वार्डरोब से या वार्डरोब नहीं कहेंगे, कबर्ड से कुछ यूनिक ग्लोव्स और नी कैप और शूज और जैकेट निकालूंगा which has this type of arrangement of setule and setae which is found on spider's leg, जो बैटरी ऑपरेटेड होगा. ऐसे वो अगर मान लो हॉस्टल वार्डन अभी कौन है, अगर तुम लोगों को तो हॉस्टल से मतलब ही नहीं है. सो वार्डन हैज चेंज. पहले गगन गर्ग थे, अभी बकुल गोहेल हो गए हैं. तो बकुल गोहेल अगर आता भी है आपको सरप्राइज चेकिंग के लिए, सपोज कोई लड़का कंप्लेन किया कि साहब आई फाउंड, नाम बोलो, तीर्थ, तीर्थ को मैंने देखा रात में मेरे कमरे में, वो बाहर की तरफ से झांक रहा था. तीर्थ कहता है कि साहब पॉसिबल कैसे है, देयर वाज नो पाइप, नो वॉल, नो रोप, मैं कैसे जाऊंगा बाहर की तरफ से, ये मुझको झूठ बोलता है. बकुल आएगा रेड डालने के लिए, चेकिंग करेगा आपके कमरे में कि आफ्टर ऑल हाउ डिड तीर्थ क्रॉल. तो उसको ग्लव्स, नी कैप, शूज, जैकेट वो सब से ऑर्डिनरी दिखे. बट देयर इज स्पाई बटन, तो बैटरी ऑपरेटेड, जिसको अगर मैं पुश करता हूँ तो उसमें से वो सेट्यूल सीते जैसे स्ट्रक्चर निकले. एंड नंबर ऑफ दो सीते, सो इट इज वेल कैलकुलेटेड कि उससे जो जो इसको नैनो सक्शन या नैनो क्या कह रहा है, ये नैनो सक्शन मटेरियल या ऐसा कुछ कहा ना किसी लड़के ने, तो उससे जो नैनो सक्शन, तो नैनो सक्शन इज नॉट नैनो सक्शन. नैनो सक्शन मीन्स द सरफेस एरिया ऑफ दोज सक्शन ट्यूब्स जो क्रिएट होगा, जो बैटरी स्विच ऑन करने पे जो ट्यूब्स निकलेंगे उस ग्लोव्स और शूज और जैकेट से, वो ट्यूब उस वॉल पे जो सक्शन की वजह से एडेसिव फोर्स क्रिएट करे, उन सब का टोटल सम is more than or should be more than 600 Newton, then only you can climb. Now अगर वो 600 न्यूटन से बड़ा है, मान लो 700 न्यूटन, तो तुम तो उस पे स्टिक हो गए, तो चलोगे कैसे? How would you move? Am I clear in my question? Hello, sir. His question, yes.
Yes, sir. Sir, that adhesive that paint is only applied for the 40% of your body. So like 60% is still like वो क्या बोले वो मतलब वो जो कंपनसेट करने के लिए वो आपने अभी जो बोला ना कि मतलब अगर अब स्टिक हो गए तो उसको मतलब ये और लाइक कंपनसेट करने के लिए यूज होता है. चलो ठीक है, सोचना, दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. देयर आर फंड्स आल्सो अवेलेबल फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट. यस, कोई बोल रहा था. Hello. Sir, we can made. Sir, you was asking how to made which can scroll up the wall. How to make what? Sir, we can make this kind of technology like we can mount a propeller on a car which stick to the wall and can scroll up the wall. Right. So that propellers will force the car onto the wall and it can go up. Propeller. Yes. Propeller. So that's one of the idea. So you want to fly. No, sir. We will mount a propeller on a car, and with the help of that propeller, that car will stick to the wall because of the fan speed of the propellers. So on the car, not on you. मैं तो तुमको कह रहा हूँ चढ़ने के. Yeah, we can also make that kind of thing. ने जो सिचुएशन बताया वो तो धूम 2 या धूम 3 में वो सिचुएशन दिखाया था, जिसमें वो एक रोबोट के थ्रू कोई ज्वेलरी एग्जीबिशन में उसने स्टीलिंग की. एनीवे, देयर कुड बी वेरियस सिचुएशंस. नो, अब चलो मुझको आगे बढ़ने दो. देयर कुड बी वेरियस सिचुएशंस. These examples are given to you, or these questions are posed to you just to excite you to think in the direction that you can play with materials and you can do something which is very fantastic, which cannot be possible in normal macroscopic. Macro means जो मीटर स्केल पे है, माइक्रो मीन्स जो माइक्रोन स्केल पे है. राइट. तो जो माइक्रो स्केल पे है वो मीटर स्केल पे पॉसिबल नहीं है, जो मीटर स्केल पे है वो माइक्रो स्केल पे नहीं दिखता है, और माइक्रो से भी एक लेवल नीचे है जो नैनो स्केल है. दैट इज अ डिफरेंट वंडरफुल वर्ल्ड. So just to relate you with these three different worlds where different type of forces dominate, उसके लिए ये एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं. Here on this slide, you have been given one link of a YouTube video. इसमें ये स्पाइडरमैन 2 का ये सीन है, ये उसका स्क्रीनशॉट है. ये दोनों इमेजेस आर स्क्रीनशॉट ऑफ दोज ऑफ दिस सिचुएशन, जिसमें ये जो स्पाइडरमैन है उसने न्यूयॉर्क सिटी के एक ट्रेन को रोका था बिकॉज ही केम टू नो दैट some mile away the train line is completely broken. Therefore, he wanted to save the lives. So he did this. तो लेफ्ट साइड का जो सीन है वो देख रहे हो. There are many spider webs which are pulling that train behind, backward. और ट्रेन के इंजन पे या फ्रंट पे ये लड़का वहां पे स्पाइडरमैन वहां खड़ा है. Now the question is, could a spider's webbing be strong enough to stop a train? Or will this situation break apart, tear apart the body of the Spider-Man, whosoever the person is? So this is the real numerical problem. That could a spider's webbing be strong enough to stop a train? Consider the running speed of this train. ये जो है वो सिंगल कंपार्टमेंट सिंगल कार ट्रेन है, R160 has 90 kilometer per hour. So if a train is running at a speed of 90 kmph, can
spider's web stop that train by such situation, जो यहाँ पे दिखा हुआ है. So this is a simple mechanics problem. सिंपल मैकेनिक्स प्रॉब्लम जिसमें फोर्स डायग्राम बना के कौन कौन से कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन which will resist the forward direction force of the train engine. ये कैलकुलेट करके तो by 30th January Sunday on Moodle. Again, assignment is not part of your grading, and therefore if you submit it you will get bonus marks. You will get bonus mark. ठीक है. First 10 right submissions, correct submissions will get bonus marks. That is the offer from my side of this problem. Okay. So now moving ahead, there is another creature in nature which is called gecko. And gecko's feet again has historical value. So gecko is a big size lizard, you can say. Big size. तो गेको का जो बॉडी वेट है वो मिलीग्राम में नहीं होगा. गेको का बॉडी वेट certainly 300, 400, 500 ग्राम में होगा. And the difference between this gecko and a spider's legs is the spider has 8 legs. Orthopedic कहता हूँ. और क्या स्पाइडर किस क्लास का है? ये है ऑर्थो Arachnid. हाँ Arachnid. नहीं यार, नहीं वो जो स्पेसीज के जो क्लासेस हैं 8 legs इंसेक्ट्स जिस क्लास को बिलोंग करते हैं. एनीवे, सो स्पाइडर हैज 8 legs और इसका इसका भी तो 8 ही है. 4 इधर 4 उधर. Okay. So gecko, if you see on Google, geckos were used in ancient wars. जब वो किंगडम वाली लड़ाई होती थी फोर्ट्स, तो दूसरे किंगडम की आर्मी used to come to another kingdom to attack, and there are walls in the fort. So fortification इसी के लिए होता था, to protect themselves from enemy attack. So what geckos did at that time, that the army throws a gecko on the wall of the fort, और वो थ्रोइंग वो लोग एरो से करते थे. सो एरो हेड पे गेको को बांध के उड़ाते थे, फेंकते थे, और गेको के टेल में, rather not tail, in the waist एक रोप बंधा होता था. And gecko reaches to the height of the fort. It grips on the wall, and the grip is so strong that it can hold 5 to 10 human beings. तो जो रोप उसके वेस्ट पे बंधा हुआ है, उस रोप के को पकड़ के नीचे से आर्मी के 5-6 लोग ऊपर चढ़ जाते थे, और ऊपर चढ़ के फिर वो they climb down on the other side of the fort. They open the door of the fort, and there, that is how the army entered in the enemy's den. So this was the function of gecko. In this case also, gecko's feet structure is playing very important role. The nano bushes or nano hair that are coming out of those feet are the region of
exerting that force which is higher than the body weight of 5 to 6 fully grown up army people. This is another example of trying, give it a try to make something which can make you walk on the wall, like these spiders do, or like these lizards do, or like any other similar animal does. Okay. So now coming to slightly science part of all these dreamy or fictional or not so real looking situations. So what is creating this type of force? इसका नाम मैंने आपको बताया वंडरवॉल फोर्स. Wonderwall force is certainly force exerted, attractive force exerted between two layers of atoms at the interface. इंटरफेस वो हुआ जहां पे दो सरफेस टच कर रहे हैं. तो एक साइड से एक डिफरेंट मटेरियल है, दूसरे साइड से डिफरेंट मटेरियल है, दोनों के डिफरेंट एटम्स हैं. दोज एटम्स आर एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम, और उस फोर्स की वजह से ये वंडरवॉल फोर्स क्रिएट हो रहा है. दिस वंडरवॉल फोर्स इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द कोवेलेंट और आयनिक फोर्स. क्लास टाइम कब तक का है? 11:30, 11:15, 11:30. 11:30. हाँ, तो अभी कुछ टाइम है, 10 मिनट है अभी. ओके, सो लेट मी टेल यू दिस, दैट let me give you a simple example. There is a jewelry. आजकल जो इसको हम लोग फेक ज्वेलरी नहीं, फेक ज्वेलरी तो नाम नहीं है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी. Sir, imitation. Imitation jewelry. करेक्ट. तो वही इमिटेशन में नाम याद करना चाह रहा. तो इमिटेशन ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है आजकल. इमिटेशन ज्वेलरी में क्या है? आपका एक्चुअल जो ज्वेलरी है दैट इज मेड ऑफ सम वेरी नॉट सो प्राइसी, नॉट सो कॉस्टली मटेरियल. ओके, सो मान लो स्टील का बना हुआ है, उसके ऊपर हमने गोल्ड प्लेटिंग कर दी. अब वो गोल्डन दिख रहा है, so nobody can make out when you wear it in some wedding. Nobody can make out कि वो गोल्ड, प्योर गोल्ड का ज्वेलरी है या गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी. उसका नुकसान ये है, इवन इफ यू आर वियरिंग अ प्योर गोल्ड ज्वेलरी, अदर जेलस पीपल विल डिसरिगार्ड दैट, यार ये तो इमिटेशन पहनी हुई है. ठीक है, बट डोंट गो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट साइकोलॉजी बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग इमिटेशन और प्योर jewelry. Right now I am talking about the material specific property. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल प्लेटिंग कर रहा हूं, सरफेस पे मैं गोल्ड लगा रहा हूं एंड दैट बिकम्स गोल्डन. सरफेस को मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं. मान लो वुड का एक ब्लॉक है और उसके ऊपर मैंने सिल्वर प्लेटिंग कर दी. इट बिकम्स कंडक्टर, राइट. जबकि वुड का जो ब्लॉक अगर ऐसे रहता तो वो इंसुलेटर है. द मोमेंट आई कोट इट विथ सिल्वर और कॉपर और सम कंडक्टिंग मटेरियल, इट बिकम्स कंडक्टर. अच्छा, तीसरा एग्जांपल लीजिए, टेफ्लॉन कोटेड जो यूटेंसिल्स होते हैं. ऐसे वो यूटेंसिल मान लो आयरन का बना हुआ है, बट उस पर हमने टेफ्लॉन की कोटिंग कर दी, तो अब वो शाइनी भी हो गया और नॉन स्टिकिंग हो गया, राइट.
तो इट इज, एक तो चीज क्लियर है कि जो ही हमने सरफेस पे कोई कोटिंग की किसी दूसरे मटेरियल की, दैट ऑब्जेक्ट टेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. The second thing that I want to tell you is whatever is happening on the surface itself. तो जो इंटरेक्शन, जो मान लो, if I keep you blindfolded, right, एक को मैंने वो वुडन क्यूब टच कराया, तो आप टच करके बोलोगे कि यार ये वुड जैसा लग रहा है, वुड है या कॉक है, इस तरीके का कोई मटेरियल है. दूसरे को मैंने सेम वुडन ब्लॉक सिल्वर कोटिंग करके दिया, तो वो कहेगा कि ये मेटल का है, बिकॉज ऑफ द स्मूथनेस दैट द पर्सन्स फिंगर्स आर एक्सपीरियंसिंग while hovering or while touching the surface of that block, right? Touching the surface means interacting with that surface. So all interactions, all reactions, all actions are taking place at the surface. Electrical property आ रही है surface की वजह से. Feeling of shininess आ रहा है optical property की वजह से, surface की वजह से. Feeling of softness आ रहा है surface की वजह से. Surface is actually the region behind all interaction between two bodies, not the meat of the body. तो यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया हुआ है सरफेस एंड मीट. मीट यानी बिलो सरफेस. व्हाट इज बिलो सरफेस? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटम. वन, इस कलर को क्या बोलेंगे? वन इज ब्लू, अनदर इज, लेट अस टेक इट पिंक. पिंक होना चाहिए. तो जो बिलो सरफेस जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, विच आर कलर्ड पिंक, and the surface atoms are blue colored atoms which are different from pink colored atoms property wise. हो सकता है उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उसके कारण उनके इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी डिफरेंट है, उसके कारण उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और कंडक्टिविटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ एटम्स. तो जब तक सरफेस पे ये ब्लू कलर्ड एटम है, तब तक this cube will behave as this blue colored atom, or the property of this cube will be dominated by the nature of these blue colored atoms. और जो ही आप उस ब्लू कलर वाले सरफेस को स्केल ऑफ कर दिया, आपने हटा दिया, स्क्रैप करके निकाल दिया, and you are left with only these 27 pink color atoms, तो इसी क्यूब का की प्रॉपर्टी gets changed. Agree or don't disagree? Sir. Yes or no बोलो. Yes. So the point I am trying to make is that everything is happening on the surface. Forget about the meat of the body. The surface is determining the property of the material. Quote under quote. Surface is determining the property of the material when it is in use. Right? Ab, the next point comes to wonder about is that surface to volume ratio of any solid. Surface to volume ratio, mind it, surface to volume ratio of any solid material plays very important role in determining physical and chemical properties of the material.
ओके, इस स्लाइड से हम लोग अगला क्लास शुरू करेंगे। आज बताना बहुत कुछ था लेकिन अब नहीं बना, कोई बात नहीं। शुरू में तुम लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया, इसलिए थोड़ा सा मेरा पेस हो रहा। ओके, सो आई एम क्लोजिंग टूडेज class, so I will stop sharing. और बताइए इफ यू हैव सम क्वेश्चन। ये देखो, ये भागना शुरू हो गया सब।